Hi guys, hello everyone. This is Saurav here, and welcome to another session of KVPY SX program on the Vedantu's viewers channel. As you all know that हम लोग every week कुछ नए videos लेके आ रहे हैं, so that your understanding in certain specific tricky areas becomes much better. So please do keep following us. आगे और भी सारे videos आएंगे. और आज के लिए मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूँ विच इज अबाउट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सॉलिड स्टेट क्लास 12th का एक काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टॉपिक टू अंडरस्टैंड। A lot of questions do get asked on this, and one of the major challenges in understanding this is that we have to understand the three-dimensional packing of spheres. Okay, चलो आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? सो सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज क्लोज पैकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग होती क्या है? लूज पैकिंग कुछ हो सकती है, फिर क्लोज पैकिंग इज समथिंग दैट वी शुड बी स्टडिंग, और इज देयर समथिंग एल्स टाइप अदर टाइप ऑफ पैकिंग एज वेल? सो हिसाब ये है कि अगर आपने कोई भी आप किसी शॉप में जाते हैं, जैसे कि अगर आपने फल के शॉप में जा रहे हो, और इफ यू गो टू अ शॉप विच सेल्स स्वीट्स, यू माइट हैव सीन दैट दे कीप दीज फ्रूट्स और स्वीट्स एग्जैक्टली इन दिस फैशन। एक और तरह का पैकिंग होता है जो कि अगर आप इफ यू हैव परचेज्ड टेनिस बॉल्स और बिलियर्ड्स बॉल्स एंड दे विल बी पैक्ड इन द बॉक्स लाइक दिस। ये जो दो तरह के पैकिंग होते हैं इनको हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्लोज पैकिंग का मतलब इसमें हमने कोशिश की है कि देयर शुड बी एज लेस गैप एज पॉसिबल बिटवीन द एंटिटीज विच आर इन्वॉल्व। तो यहां इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, and this is known as square close packing. From the looks of it, ऐसे ही देख के लग रहा है कि square close packing में काफी सारा region unoccupied है. Okay, can you see this region is fairly unoccupied. So, and this looks like a perfectly stacked one, the one on the left, जो fruits का जो picture है, that looks like a perfectly stacked one. So hexagonal close packing turns out to be more efficient than the square पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज्यादा एफिशिएंट होता है। अगर आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर और स्क्वायर क्लोज पैकिंग लगाना शुरू किया, मान लो कि दिस इज लाइक वन लेयर ऑफ एटम्स, उसके ऊपर और एक लेयर ऑफ एटम्स लगाए, उसके ऊपर और एक लेयर ऑफ एटम्स, सच दैट ये जो भी स्फीयर्स हैं इनके सेंटर्स कोइंसाइड करने लग गए। लेयर 1 कोइंसाइड्स विद लेयर 2 कोइंसाइड्स विद लेयर 3। अगर आपने इस तरह से रखा, देन the arrangement that you would get is a simple cubic arrangement, and a simple cubic arrangement की जो packing fraction होती है वो 52% होती है। So packing efficiency जो होती है 52 पर packing fraction is 52.52 होता है। बट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हम पैकिंग एफिशिएंसी अगर आगे चल के देखेंगे तो वो 74% होता है। दैट मींस इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर पैकिंग कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो अब यहां देख रहे हो कि दीज आर atoms which are arranged in the form of square। अब इनके centers को connect कर देंगे अगर हम, then I'll create a square out of it। I'll create a square out of it। Whereas in this case, if I connect the center of the spheres like this, you can see that in a two-dimensional plane, I can create a hexagon I can create a hexagon, और इस तरह से मैं बहुत सारे हेक्सागन्स क्रिएट कर सकता हूं इसके आसपास लगे हुए। Okay, I can create a multitude of hexagons। एक हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर मैं जनरेट कर दे रहा हूं। ओके, और इन सारे हनी कॉम्ब वाले स्ट्रक्चर्स के बीच में यहाँ पे मुझे एक एटम दिख रहा है। ये हो जाता है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बट ये जो पैकिंग हो रही है वो हम 2 डायमेंशन में कर रहे हैं।
This is square packing or square closed packing in 2 dimension. This is hexagonal closed packing. Closed packing in 2 dimension. This is also done in 2 dimension. इस देखो 1 dimension क्या होगा? I would have only length. 2 dimension I'll have length and breadth. 3 dimension will be length, breadth and height. That means अगर ये एक layer of atoms है, इसके ऊपर अगर मैंने और एक layer of atoms रखा, if I place another layer of atoms on the top of it, then I will get a 3-dimensional packing. ओके सो ये हमने रेप्लिकेट कर सकते हैं और 3-dimensional पैकिंग को हमें समझने के लिए अगर हम समझ जाते हैं अच्छे से, सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में और एचसीपी यूनिट सेल हमें दिखता कैसा है. सो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैंने लेयर्ड अरेंजमेंट मुझे बनानी है एंड इसको बनाने के लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, आप देख सकते हो कि आई हैव added an image and इस image में atoms hexagonal arranged है. I have also labeled certain atoms, आप देख सकते हैं कि I have labeled these atoms A, B, C, D, E, F and X. Please remember to focus on them. Now, about every atom you can see I have drawn. तो if you arrange 3 spheres, 3 spheres को अगर आप लगाते हो तो उनके बीच में एक triangular region आता है, वो triangular void कहलाता है. This is a triangular void. This one is a triangular void. ये जो है वो एक triangular void है. अब हिसाब ये है कि किसी भी एक स्फीयर के अराउंड आई कैन सी 3 triangular voids which are colored as red and 3 which are colored as blue. देखो blue red वाले जो हैं like this one, all of these red colored ones, अभी देख सकते हो this one, just a moment, let me take a pen. Like this one, this one, this one, ये जो रेड वाले हैं ये ऊपर उठते हुए ट्रायंगल के जैसे दिख रहे हैं. So they are looking like a triangle and this looks like an inverted triangle. Now think logically. अगर मुझे this is the first layer of atoms. I will try to place atoms in the second layer. Okay. Now second layer में atoms में कैसे place कर सकता हूँ? The thing is, if I place an atom on the red colored sphere, red colored triangular void, मतलब spheres are in one plane, इसके ऊपर एक और sphere ऊपर से आ रहा है. If I place it on red, then मुझे red के ऊपर ही रखना होगा. I have to create a regularity. So I can, if I am choosing the triangular void as red, above which I will keep a sphere of second layer, then in all second layer atoms will come on red. Or if I'm choosing blue, then all of them will come over blue. It cannot ever happen कि ये जो स्फीयर आप देख रहे हो ना, इसी स्फीयर का साइज इसी स्फीयर के साइज का मैंने एक एटम रेड पे भी रखा और एक एटम ब्लू पे भी रखा है. दैट विल क्रिएट अ haphazard arrangement. I will not get a regularity. So if I am choosing red, I have to continue with red. If I am choosing blue, I have to continue with blue. आप कुछ भी चूज कर सकते हो. There is absolutely nobody or no restriction. आप कुछ भी चूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे convenience के लिए I have chosen red. ठीक है, मैं रेड के ऊपर ही एटम्स प्लेस करने वाला हूं. आप तो समझ गए हैं कि ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, ये मुझे रेड के ऊपर रखना है. सो चलिए रेड के ऊपर रखते हैं. सो अब देखो, एन एटम विल कम एंड सिट ऑन द टॉप ऑफ रेड. दिखा आपको? अनदर एटम विल कम एंड सिट ऑन टॉप ऑफ रेड. इनका कलर्स मैंने डिफरेंट क्यों लिया है, आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर, बट मान लेते हैं कि इन्हीं को there is a different color. Again an atom will set. So you can see that I have placed
the second layer of atoms only over the red colored triangular voids. देखिए कोई भी ब्लू कलर ट्रायंगुलर voids के ऊपर एटम्स नहीं बैठे हैं, समझ में आया? कोई भी ब्लू कलर ट्रायंगुलर voids के ऊपर एटम नहीं बैठे हैं. Now if I want to analyze A, B, C, D, E, F, जिन हाईलाइटेड लेयर 1 के एटम्स, इनको मैं बोल देता हूं ये लेयर 1 के एटम्स और लेयर A के एटम्स हैं. ये जो है ये लेयर A के एटम्स हैं और ये लेयर A के A, B, C, D, E, F को मैं एनालाइज करना चाहता हूं विथ दीज थ्री स्फीयर्स. जो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 येलो स्फीयर्स जो यहाँ पे रखे गए हैं, इनके साथ में इनको एनालाइज करना चाहता हूं. I want to see that what do they look like. So what I'm gonna do is I'm gonna make the other spheres of second layer a little light. अब देखिए. So now you can see if you focus on A, B, C, D, E, F, you are getting a hexagon. उसके बीच में X है, and within this hexagon you can see 3 yellow colored spheres. Understood? 3 yellow colored spheres. If I recreate only this part separately, तो देखो यही same part जो layer A है उसको मैंने यहाँ पे लगाया, and I am gonna use only the 3 yellow colored atoms to be placed within this hexagon. देखो hexagon के ऊपर ये इस तरह से बैठेंगे. Okay, I hope this is clear. If you focus only on this, then you can create a hexagon. इसी hexagon के बीच में यहाँ पे आपको X दिख रहा है और इनके ऊपर 3 एटम इस hexagon के अंदर आपको दिख रहा है. You are able to see 3 atoms in the second layer within them. Okay, above this hexagon. ठीक है? So let's move ahead. अगर मैंने थर्ड लेयर अब डालने की कोशिश की, देखो थर्ड लेयर में क्या होगा. आपने तो ये बनाया था फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर इस तरह से रखा था. Okay? Now if I want to create a hexagonal close packed arrangement, please do remember the third layer is placed in such a way that third layer atom the center of the third layer atom coincides with the center of the first layer atom. Center of third layer atom must coincide with the center of first layer atom. अगर ये coincide करते हैं then I will get hexagonal close packing. If they do not coincide then हमें cubic close packing मिलता है, which is a different story altogether. But मुझे आज hexagonal बनाना है तो मैं वही create करने की कोशिश करूंगा. तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे थर्ड लेयर ऑफ एटम्स प्लेस करने हैं, सो कैन आई से कि ये जो 3 येलो कलर के एटम्स मैंने दिखाए हैं, ओवर दीज 3 येलो कलर्ड एटम्स आई विल प्लेस एन एटम सो दैट कि it looks as if it lies just above X. चलो देखते हैं. मुझे थर्ड लेयर का एटम रखना है, so where would I place so that its center coincides with layer 1 atom? I will place it like this. देखो. Okay, I'll show it again. It comes and sits exactly over these 3 atoms of layer 2 and in such a way that the center of it coincides with the center of atom X, which is present in layer 1. Okay.
अब मैं B के ऊपर रख देता हूं एक एटम, C के ऊपर, क्योंकि अगर X के ऊपर एटम आ रहा है थर्ड लेयर में तो सेम अरेंजमेंट, रेगुलरिटी इफ इज फॉलोड, देन आई विल बी गेटिंग एग्जैक्टली द सेम arrangement of atoms as I have observed in layer 1. Okay, just a moment, I'll write this over here. So center of layer 1 atom coincides with center of layer 3 atom. अब कोई भी दो फिर से मैंने यहां पे रखा, so can you observe one thing very carefully? लेयर 1 में जो भी एटम्स हैं उनके ऊपर लेयर 3 के एटम्स कोइंसाइड कर जा रहे हैं, एंड सो वी गेट एन अरेंजमेंट लाइक दिस, और उनके बीच में 3 एटम, ये येलो एटम्स प्रेजेंट हैं। ये जो अरेंजमेंट है हमारा वो हो जाता है HCP। ओके, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज HCP, एंड इसका लेयर्ड फॉर्म अगर मैं बोलूं तो इफ दिस लेयर इज लेयर A, देन ये लेयर भी तो एग्जैक्टली इसी की जैसा है, सो देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड लेयर A एंड दिस विल बी कॉल्ड लेयर B, सो दिस अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड AB, AB, AB and so on and so forth. Okay, चलिए let's move ahead. So hexagonal closed pad unit cell हम देखते हैं कैसा होता है. So the unit cell looks like this. You can see there are 7 atoms in the bottom layer, 7 atoms in the top layer and 3 atoms over here. Exactly यही चीज जो हमने यहाँ पे देखी थी वही है. 1 2 3 4 5 6 7, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये कंट्रीब्यूशन के साथ हम देख रहे हैं, एंड इसके नीचे भी 7 रहेंगे लेयर A में, एंड लेयर B में I will have 3 atoms within this. Okay, so this is what it looks like. Clear? This is what it looks like. Perfect. मैं इसको थोड़ा सा और elaborate कर देता हूं. I'll make some more triangles. Understood? So this is bottom layer, top layer, middle layer, और ये जो axis है, if I take this axis goes through the middle of the triangle. ठीक है, this axis goes through the middle of the triangle. आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से अगर आपने एक axis ड्रॉ किया, वो इन 3 एटम से बने हुए ट्रायंगल के बीच से वो जाएगा, and it will pass to the top layer face center atom and the bottom layer face center atom. Okay, now there are multiple features of this which we need to know, so let's start discussing them one by one. So सबसे पहला फीचर हमारा ये कि what is the rank of the unit cell. The rank of HCP unit cell. रैंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से. So अब देखो ये जो 3 एटम है, these 3 atoms are present completely inside the unit cell. So those 3 atoms in the second layer, their contribution is 1. Plus face center atom will always, this face center atom and this face center atom, its contribution will always be half. So there are 2, contribution is half. और जो भी corner atoms हैं, each corner atom, there are 12 corner atoms and each corner atom
विल बी शेयर्ड बिटवीन 6 हेक्सागन्स, 3 एक लेयर में, 3 उससे ऊपर वाले लेयर में। ओके, अगर आप यहाँ पे हेक्सागन बनाते हैं तो इस तरह से 3 हेक्सागन इसी लेयर पे बनेंगे, इसके ऊपर वाले लेयर पे भी 3 हेक्सागन्स बन जाएंगे। सो 12 टाइम्स 1/6, so we will get a total contribution of 3, 1, 2, and that is 6. Rank of HCP unit cell is 6. Perfect. Next. Okay. Relationship between A and R. So these two atoms, if you pick, or you pick any two atoms, okay, जैसे कि ये atom भी ले लिया, this atom and this atom, the distance between any of these two atoms is A, and A is equal to 2R. A is equal to 2R. Any two adjacent atoms, the distance between them is A, and that distance is equal to 2R. Third, coordination number. How do we identify coordination number? तो मान लो कि एक dummy atom, हम इस atom को ले लेते हैं. Okay, let's say we take this as the atom under consideration. तो एक बात बताओ भाई, in that layer there are 6 atoms surrounding it. Okay, there are 6 atoms surrounding it जो कि इसके साथ कांटेक्ट में थे. Below this there are 3 atoms which were in contact with it. अब इसके ऊपर भी वैसे 3 एटम्स रहेंगे जो कि लेयर 2 में प्रेजेंट है. So this, if this is layer 1, this will be layer 2, this will be layer 3, layer 4. Layer 4 and layer 2 will be exactly the same. So there will be 3 atoms in layer 2, there will be 3 atoms in layer 4, and 6 atoms over here. So 6 plus 3, 9, plus 3 above it. So coordination number will become equal to 12. Okay, इस atom के लिए 6 atoms, these 6 atoms are in this layer, these 3 are below it, similarly 3 atoms above it will also be counted, and the coordination number will turn out to be 12. Okay. The next very interesting thing that we try to calculate is the height of HCP unit cell. Okay, now try and understand every where this calculation of height has been asked. It has been asked in JEE Mains, this has been asked in NSEC, this has been asked in JEE Advanced as well. JEE Advanced पे तो वॉल्यूम के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. So ये हाइट की कैलकुलेशन आपको समझनी होगी अच्छे से. इस हाइट की कैलकुलेशन को समझने के लिए what I will be doing is I'll be taking certain atoms and I will be drawing them separately. Okay, इसको थोड़ा separately draw करते हैं. Okay, I am choosing this atom, this atom, this atom, and this atom under consideration to calculate the height of the HCP unit cell. So I'm just highlighting these atoms so that you will be able to follow them. Okay, ये 4 atoms को मैं consider कर रहा हूं. If I draw these 4 atoms, चलो इनको बनाते हैं. One, two,
and there's another atom over here. If I connect this atom with the ones which I have shown over here, wouldn't I get something like this? Wouldn't I get something like this? Suppose ये ऐसा हो गया कुछ. ठीक है, तो हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी है. I have to calculate this height. Can I say that this height is equal to c upon 2? That is written over here. This height I have to calculate this height, guys. देखो यहाँ पे I have to calculate this height. This is c upon 2. Okay, and so I will be using geometry to do this. I'll be using geometry to do this. So let's say I mark this atom as A, और इसको मैं A बोल देता हूं, इसको B बोल देते हैं, और ये पॉइंट O हो गया. Okay, this point is O, this is B. This angle is 90 degrees. Okay, now in this triangle ABO, angle AOB is 90 degrees. Okay, angle AOB is 90 degrees. So can I use Pythagoras theorem that AB square will be equal to BO square plus AO square? Perfect. Now what will be AB square? I have told you the distance between two adjacent atoms, this will be equal to A. So AB square can be written as A square. BO square, it looks like it's the, can I say this point is the centroid? So from B to O, it will be A upon root 3 square, and this is AO, that is written as C by 2 square. So can I write it like this? A square, which is equal to A square upon 3 plus C square upon 4. Okay, so I'll be getting 2A square upon 3 times 4, which is equal to C square, and therefore C will be equal to root over 8 upon 3 times A. Can I say that? C will be equal to A. Please do remember, this is a very, very important conclusion. Okay, this is a very, very important conclusion. C is equal to 8 upon 3 root A. Sorry, root over 8 upon 3 times A. So this is the height of the HCP unit cell. ठीक है, A की जगह पे अगर आप 2R रख दोगे, so 2 times root over 8 upon 3R हो जाएगा. Perfect. Okay, चलिए. So let's move ahead to calculate the volume of the HCP unit cell. Perfect. Let's try to calculate the volume of the HCP unit cell. So can I say that, let
me draw this over here. So can I say that the volume of HCP unit cell will be equal to area of base times height, the area of base times height. And what is the area of the base? The base is hexagonal and height you already know, तो easy हो जाएगा calculation. So this is the base. Let's say this is the base. Okay. The base is divided into 6 triangles. Okay. Like this. Just a rough, from this rough idea you can make sense of a lot of things. Can I say that this distance is A? Okay, this distance is A, and you have to calculate the area of this triangle. So what is the area of the triangle known as, or how do we calculate the area of the triangle? Let's say we want to calculate the area of this triangle. If I calculate the area of one triangle, I'll be able to calculate the area of all the triangles or the whole hexagon. So area of triangle is equal to half times base times height. Okay, understood? What do you think? So this is h. What do you think will be the height? So let's do a small geometry assessment. Let's say this is point, okay, it will not be visible using this. Okay, so let's say this is point A, this is point B, this is point C, this is point O. Okay, this distance, these two atoms are also in contact. This is A. This distance will be equal to A upon 2. So what will this distance be equal to? Let's use Pythagoras theorem. So A square is equal to A square upon 4 plus H square. So 3A square upon 4 is equal to H square, which is equal to, which gives H as equal to root 3A upon 2. So area of the base becomes A and height becomes root 3A upon 2, which becomes root 3A square upon 4. So now the total area of the hexagonal base will be 6 triangles, each of which is root 3A square upon 4. And height we have already calculated, root 8 upon 3A. So कितना हो जाएगा ये? This will become 2, root 3 gets cancelled. I will be having 2 root 8 A cube. Okay. We can further simplify this as 2 root 8 will be 2 root 2 A cube. So I'll get 4 root 2 A cube as the volume of HCP. Now if, since A is equal to 2R, अब यहाँ पे मैंने अगर volume of HCP को R के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, then I'll get 4 root 2 times 2R whole cube
So I'll be getting how much? 8, 8, 4, 32. Okay. I made a mistake. I'm very sorry for that. I made a blunder over here. Okay, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाए. मेरे से गलती हुई है यहाँ पे. Okay, I have made a small mistake over here. So ये देख लीजिए. यहाँ तक पार्ट सब कुछ सही है. This will be 2 and this will be 3. So यहाँ पे 3 आ जाएगा और √8 will become 2√2 a cube divided by 2. So हमारे पास आ जाएगा 3√2 a cube. So volume of HCP will become 3√2 a cube. I'm very sorry for this. Okay, 3√2 a cube. अब हमने यहाँ पे 2r रख देना है. So 3√2 a की वैल्यू 2r, इसका क्यूब ले लिया हमने. So 3√2 times 8r cube, I will be getting 24√2r cube. Is that understood? This will be the volume of HCP. Please remember ये कुछ important deductions, because volume of HCP has been asked earlier in JEE Advanced examination. Okay, pardon me for this small calculation error. So if teachers can end up making mistakes, so आप लोगों को थोड़ा और संभल के करना पड़ेगा. हमारा एग्जामिनेशन देने का टाइम चला गया, so हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं कभी कभार, बट आपसे मिस्टेक्स आप कोशिश कीजिएगा कि you do not end up making such silly mistakes. Okay, so is that clear? So this and this. So C is known, so volume will be equal to, कितना लिखा था हमने volume? 3√2 a cube, and or in terms of R, 24√2 r cube. Okay, very important conclusions. Okay, very important conclusions. ठीक है. अब एक लास्ट चीज हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है. सो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द HCP. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HCP. सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना होगा? 6 times 4/3 pi r cube. ये लिखेंगे ना, 6 times 4/3 pi r cube, because effectively there are 6 atoms और हर atom का radius r है, divided by 24√2 r cube. ये r cube cancel, 6, 4, 24, 4 and 4 cancelled. We get pi/3√2. ये कितना हो जाता है? 74. We get 0.74 होता है, and packing efficiency becomes equal to 74%. Okay, so two another important deductions. Packing fraction is 0.74, packing efficiency is 74%. A lot of people think that कि यार यूनिट सेल में तो ज्यादा एटम्स हैं, तो FCC का जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा उससे भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. FCC का पैकिंग फ्रैक्शन भी 74, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 74. ऐसा इसलिए क्योंकि FCC के कंपैरिजन में ये यूनिट सेल का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है. ओके, इट इज स्लाइटली लार्जर एज कंपेयर टू FCC यूनिट सेल. लेट्स मूव अहेड. हम लोग
The next thing that we'll try to do is locate the types of locate the voids which are present in HCP. Now on the outset मैं आपको ये बता देता हूं कि जो voids होंगे उनके shapes को दिखाने के लिए मैंने कुछ animations create किए हैं, but बेसलाइन ये होता है कि यू शुड नो कि व्हाट डज अ वॉइड लुक लाइक. सो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो एक टेट्राहेड्रन के बीच में रहेगा. तो जैसे कि ये एक टेट्राहेड्रन है, दिस इज अ टेट्राहेड्रन. अगर आपने इस एटम को इस एटम को इस एटम को कनेक्ट कर दिया और इससे इस एटम को कनेक्ट कर दिया, तो इन चारों के बीच में जो वॉइड प्रेजेंट रहेगा दैट विल बी नोन एज अ टेट्राहेड्रल वॉइड. एंड यहां पे आप जो देख रहे हो, if you connect these three atoms, okay, if you connect these three atoms and these three atoms, then what you will get at the center of them is a octahedral void. अब ये बोलोगे सर octahedron तो मैंने ऐसे पढ़ा था, octahedron तो मैंने ऐसे पढ़ा था सर, आपने octahedral void को इस तरह से दिखाया. तो यार देखो ये जो फिगर है इसमें हम ये वाला अगर प्लेन लें, if I take this plane and I take this plane, then I will get the, and I look from here, मैं इस तरफ देखता हूं तो मुझे वही दिखेगा. तो मान लो कि ये एटम को A ले लिया आपने, ये एटम को B, और इसको 1 2 3 4, और अगर आपने A से B की तरफ देखने की कोशिश की, if you try to look from A to B, then 1 2 3 4 will look like in this plane. इस प्लेन में लगेंगे 1 2 3 4. 1 2 3 4 को अगर आप कनेक्ट कर दोगे तो एक स्क्वायर जैसा बन जाएगा और उसके ऊपर A प्रेजेंट रहेगा, उसके नीचे B प्रेजेंट रहेगा. ओके, सो दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. चलो हम स्टार्ट करते हैं HCP में वॉइड लोकेट करना. सो इसके लिए मैंने एक HCP ड्रॉ किया है और उसके साथ एक बगल में भी मैंने HCP ड्रॉ कर दिया है. ओके, देयर आर टू HCPs व्हिच आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, बगल बगल बनाया गया है. HCP में एटम्स कहां रहते हैं? कॉर्नर पे एंड एट द फेस सेंटर, और सेकंड लेयर में बीच में रहते हैं. सो मैं एक एक करके कॉर्नर पे एटम्स प्लेस कर रहा हूं. कुछ एटम्स को मैंने कलर डिफरेंट कर दिया है जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग. ऐसा नहीं है कि एटम्स डिफरेंट है, उनकी नेचर डिफरेंट है, एटम्स आर अलाइक बट उन पिक्टोरियली, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई हैव शोन देम डिफरेंटली. This will become the center atom of the face. Similarly, नीचे के लेयर को मैंने क्रिएट कर दिया एंड वहां पे भी एक एटम फेस पे आ गया. अब मुझे सेकंड लेयर ऑफ एटम्स को क्रिएट करना है. सो सेकंड लेयर ऑफ एटम्स देखो क्रिएट हो गए, एंड दीज सेकंड लेयर ऑफ एटम्स आर कनेक्टेड इन अ ट्रायंगुलर फैशन इन, ओके. सिमिलरली अगर मैंने इसी within this HCP arrangement, if I want to look at a tetrahedral void, तो मुझे क्या चाहिए? 3 spheres, sorry, 3 spheres in one plane, and उसके ऊपर एक स्फीयर बैठा रहना चाहिए. So let's see. देखो एक यहाँ, one over here, one over here, one over here, one over here. Can you see that there is, so this atom, this atom, this atom, they form इस तरह से 3 एटम बन गए और इनके ऊपर ये पर्पल कलर का एटम बैठा रहेगा. ओके, though it is shown as inverted tetrahedron but makes no difference. नीचे की तरफ से रहे, ऊपर की तरफ से रहे, this will, इनके बीच में जो जगह रहेगी वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगी. ओके, हम नीचे की तरफ भी दिखा देते हैं. ओके, सो आई होप यू आर एबल टू सी दैट यूजिंग दिस आई हैव क्रिएटेड, using this atom alone, I have created 2 tetrahedral voids above it and below it. अब मैं इधर भी बना सकता हूं इसको लेके. Let's try and understand that
for every atom of the second layer, उसके ऊपर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और उसके नीचे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। देखो एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा। आपको दिख गया टेट्राहेड्रल? हम टेट्राहेड्रल इसी तरह से बनाते हैं। देख रहे हो, यही टेट्राहेड्रन है, इसके ऊपर भी एक टेट्राहेड्रन होगा। सो फॉर एवरी एटम इन द सेकेंड लेयर आई विल बी एबल टू सी सच two tetrahedrons above it as well as below it. Okay. Perfect. Understood? चलो, let's try and observe कि और कहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है क्या? So, अगर मैंने ये 3 पर्पल सेकेंड लेयर के एटम को येलो से जोड़ दिया, देखो फिर से मेरे पास एक टेट्राहेड्रन आ जाएगा। Okay, are you able to see? I will be able to find a tetrahedron over here. So can I say very comfortably कि इसके ऊपर टेट्राहेड्रन, इसके नीचे टेट्राहेड्रन using these 3 atoms of a triangle, and face center and the second layer I will be getting a tetrahedron above and a tetrahedron below. ये सारे टेट्राहेड्रन हमारे HCP यूनिट सेल के अंदर रहेंगे। सो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रन मुझे अभी तक कितने मिल गए हैं? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मुझे कितने मिल गए हैं? यहाँ पे टोटल कितना मिल जाएगा? 6, और यहाँ पे 1 और 1 2, टोटल ऑफ 8। ओके, 6 बिकॉज ऊपर नीचे करके यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सो अबव एवरी स्फीयर, above every sphere of second layer I'll be able to observe a tetrahedral void. Below it I'll be able to observe a tetrahedral void, and if I use the sphere of the second layer and the face center of the hexagon I'll be able to create a tetrahedral void. So number of tetrahedral void मुझे मिल गया कितने? 8। अब हमारे पास और भी कुछ tetrahedral voids हैं, उनको चलो ऑब्जर्व करते हैं। So मैंने फिर से क्रिएट किया है ऐसा, और एटम्स को कॉर्नर्स पे रखा गया, फेस सेंटर एटम्स रखे गए, सेकेंड लेयर एटम्स, एंड मैंने दूसरे यूनिट सेल में और दूसरे हेक्सागन में भी एटम्स रखने शुरू किए हैं। आई हैव स्टार्टेड कीपिंग एटम्स इन द सेकेंड हेक्सागन एज वेल। ठीक है, आई हैव डन द सेम थिंग। There is absolutely no difference that I have created. Now you can see very well that I have not placed anything over here or over here. I have created 2 differently looking atoms for these corners. Why? I'll show you. If I connect this and this, let me show it with a highlighter. If I connect this and this with this very uniquely looking atom, and I connect all of them as well, I will be generating a tetrahedral void on the edge. I will be generating a tetrahedral void on the edge. Let's see over here. Okay, let's focus only on, I have removed all the other atoms which are not important. Focus on this
focus on this, focus on this, focus on this, focus on this. Okay, yep, yes, yes. Yep. Are you able to see a two tetrahedrons created? And I will, at the center of it, I will get a tetrahedral void. That means at every edge, I will be getting two tetrahedral voids on every edge. So total tetrahedral voids I have calculated earlier, which were 8, plus there are 6 edges. Okay, there are 6 edges, each having 2 tetrahedral voids, but each edge is shared between 3 hexagons. Each 3 HCP unit cells. So I will be getting a total of 12 tetrahedral voids. Okay, our total will be 12. There will be a total of 12 tetrahedral voids. Okay. Okay, I hope you are now able to see this. Probably it was, my camera was blocking your view. You must be able to see this right now. I'll just regenerate the whole arrangement so that you can see things much better. So this was not a problem. We had created this comfortably. Now let's look at this one. Okay, I hope you are able to see all the tetrahedral voids right now. Okay, no, my camera is not blocking any view. In the next case, and I had told you that we had taken two atoms differently because we had to create tetrahedral, we had to show tetrahedral voids at the edge. And remember that they are not at edge centers. Okay, please do not say that they are at edge centers because that will be an incorrect estimation. Perfect. I hope you are now able to see everything very clearly and you are able to locate total of 12 tetrahedral voids. Okay, so let's look at how many octahedral voids do we have. Again, this will place atoms at the corner, center, and we have 3 atoms in the second layer. Remember that we need 2 triangles which are in opposite with respect to each other. We need to observe something like this. We need to observe something like this so as to create an octahedron. Okay, पहले भी हमने देखा कि हमने octahedron create करने के लिए we had 2 triangles. अगर हमने 1 sphere ऐसे रखा है, एक sphere ऐसे, एक sphere ऐसे, तो एक sphere यहाँ पे था, एक sphere यहाँ पे था, एक sphere यहाँ पे था. So we had created a triangle over here. और इन तीनों कनेक्ट करके भी जो ट्राइंगल आएगा वो एक स्टार के फॉर्म में रहेगा. मुझे एक स्टार के फॉर्म में चाहिए. चलो देखो यहाँ पे we have connected these two. We have connected these two. So this,
Okay. Now we will connect this, this, and this. Perfect. Now we'll try to generate a octahedron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8 faces. Can you see? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 corners, 8 faces, and we have created a tetrahedron. An octahedron. This octahedral void lies inside the unit cell. Okay, so the octahedral void lies inside the unit cell. Okay, chalo. I have placed atoms at the appropriate positions. And now let's look at how in another way we can create a octahedron. So you can see we are connecting this, this, and this. And then we will connect this, this, and this. I'm sorry. This one, and this one. Okay. So you can see that there are two triangles which look very much like the triangles that I had created over here. A little awkward because not a very good animation, but just does the job. Okay. So हमारे पास टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे? यहाँ पे एक, सो जितने भी एटम्स हैं टोटल उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब टोटल ऑफ effective number of atoms are 6 and there will be a total of 6 octahedral voids. Okay, 6 octahedral voids. Now, so this is what it will look like. देखिए ये लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. अब देख रहे हैं सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को HCP यूनिट सेल के अंदर ही रखा गया है. All octahedral voids are kept inside the HCP unit cell. In case of tetrahedral voids, some tetrahedral voids are on the edge. Okay, some tetrahedral voids are on the edge. कितने tetrahedral voids on the edge रहेंगे? Total of 4, and there are a total of 8 tetrahedral voids which are present inside. देखो 1, 2, 3, यहाँ 4, 5, 6. इसके नीचे भी आ जाना चाहिए था, एक यहाँ पे आएगा. ओके सॉरी, these two. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the yellow colored ones are the ones which are on the edge. The red colored ones are the ones which are in the HCP unit cell. Now, if you want to identify what is the distance from the base, so if I take your octahedral void, then if the height is h, मान लेते हैं ये height h है,
Then octahedral void is at a distance h upon 8 and 7h upon 8. ठीक है? I'm sorry, h upon 4. It is at a height of h upon 4. h upon 4 and 3h upon 4. Okay, क्योंकि एकदम बीच में आ जा रहा है ना, सॉरी, ये यहाँ this is h upon 4, this is h upon 4, so exactly बीच में है. Okay, so center means second layer and first layer के बीच में ही आ जा रहा है. So h upon 4, 3h upon 4. And B, tetrahedral voids. So the ones which are inside are at a height of h upon 8 and 7h upon 8, and one on the edges are at 3h upon 8 and 5h upon 8. ठीक है? प्लीज याद रखिए इसको, 3h upon 8 and 5h upon 8. Perfect. So इनकी हाइट है 3h upon 8, इसकी हाइट है 5h upon 8, इसकी हाइट है h upon 8, तो इसकी हाइट हो जाएगी 7h upon 8. Understood? So please follow this perfectly, and with this I take leave. हमने काफी कुछ आज नया सीखा, and I hope you enjoyed the visualizations to understand where are the voids present in a HCP arrangement. Okay. Few important things जो कि आपको मालूम होंगी पहले से, but Vedantu is conducting a Eklavya program, or whosoever is willing to participate in the Eklavya program, please navigate or please Google about it. There are a lot of amazing things about Eklavya program that have been written on Quora. Also, if there are important links related to the topper pod and the topper notice board which can be accessed. इसमें काफी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, and if we see that you have a potential, we can bring you for an interview. And whatever information that is needed for the Eklavya program is on the Telegram group with that Vedantu JE Eklavya 2022. Okay. So with that, I, Saurav Goswami, take leave. I hope you enjoyed today's session. Please do let me know how did you find it in the comment section, and if there is any query, just do ask me over there as well. Okay? So bye bye guys, have a lovely time. Let's meet in the next session.